Hey students, hi everybody, a very good afternoon to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to do really something important and something really nice. Okay, like we are going to deal with the 50 subjective questions on poems. All right, so we're gonna practice well before our exam come. All right. So everybody, now we are going to go ahead with this. Kindly just confirm in the comment section that you all can see me well and you all can hear me well. And accordingly, we are gonna make a move. Alrighty, people. Hi guys, hello everyone. Welcome to the very session, guys. A warm welcome to everybody to the very session. It's gonna be an important session wherein I'll be telling you all how are the things that you need to keep in your mind and how you need to move ahead with the right kind of an answer, how to frame your an answer, and how to make sure that whatever you're writing that is an absolute correct thing. Okay, so for that, please make sure that you all are listening to me carefully. So I would really be glad if you all can just confirm in the comment section. Hey Sanjeev, hi Uday. Hi Tomar, hi Priya, hi everybody. Your name is Arav. Okay, Arav Achal. All right, okay, it's Arav Achal Tomar. All right. Hi Unique Learning, hi Karthik. A warm welcome to everybody to the very session. We are gonna do the important stuff today. So please make sure that you all are staying tuned with me. I want to teach you all like how to write a perfect answer, and I'll be telling you all that in this very particular session. So please make sure you all are listening to me carefully and dedicatedly with all your heart. Okay, don't miss that out at all. Alrighty, people. Okay, that's great, Sanjeev. Very many congratulations if you really nailed it. I'm really glad to know this, and I always feel glad whenever my students they do good in the examination. Hi, Pranjal. Hemant, a very good afternoon, dear. Hi, Tanu. Hello, dear. You are Tohid. Hi, Tohid. All right, Simran, you're gonna nail it. I hope that you're prepared well. So all the important questions are there in this very particular session. I'm sure you're gonna love everything that we're gonna do today. Hey, Asa, you got 36 on 40. Not bad, but where did you lose 4 marks? Just work on that now. So in the next examination, of course, you don't get a chance to lose anything. Okay, people, let's get going. I'm sure you guys know my name. I'm Preksha Sharma, आपकी इंग्लिश एजुकेटर. मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बोलना सिखाऊं. आप लोगों को जो हेजिटेशन होता है जब आप काफी सारे लोगों के बीच में होते हो, अगर वहां पे आपको सोचना पड़ता है बोलने से पहले, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा. उसके लिए आपको मुझे डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा. ओके सत्यम बेटा, अभी तो सेशन पूरा प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं हुआ है. आपको पीडीएफ चाहिए. ऑफ कोर्स मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी. मैं ये पीडीएफ आप लोगों को कम्युनिटी पे शेयर करूंगी ऑन अनअकैडमी ऐप. सो इफ यू आर देयर, वेल एंड गुड. ऑलराइट, इफ यू आर नॉट देयर, देन आई वुड रियली लाइक टू टेल यू, प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप and search for my name Preksha Sharma and then start following me. If you'll start following me, you'll be getting the updates from my end. Hey Akanksha, hi dear. Hi Tanu, my name is Preksha Sharma dear. Okay, that's what is written right here on the very screen. Hemant, I am not teaching to the 11th grade students here at Unacademy. I mean on this very particular channel. I'm just teaching to the students of grade 9 and grade 10. All right. Okay, Tanu, I welcome you dear. Welcome, sweetie. And okay, 32 on 40. Nisha, that's not really a good score. Just watch out where you left. I mean, where you lost your marks. Okay, people. So, top 50 questions on poems are going to be there already. So, we are going to start with the poem Amanda, which has been written by Robin Klein. I have been saying this a lot many times. Okay, a lot many times. I've repeated this in all my classes that you need to know the title perfectly. So, the title comes with an exclamation mark. Okay, and it has been written by Robin Klein. Can anyone please tell me why there is an exclamation in this particular name? Why do we find the title like this? Why is that? Hey Priya, thank you, sweetie. Thank you so much. Lots of love from my end to you. Okay, come on, tell me, everybody. Why do we see that Amanda is the title with an exclamation mark? It's really important. Everything in English matters. You should know all the details correctly and by heart. So tell me, why is that? Okay, here we go. All right, Rishi, that's lovely, dear. That's lovely. A lot of students still have got their examination. Okay, रीना, तो बेटा देखो यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं एक्सक्लेमेशन इसलिए दिया गया है बिकॉज एक कमांडिंग टोन है. ठीक है, ये बात ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है.
Puri poem is having is having a commanding tone. Okay, commanding. Why? Because the mother has always been commanding. Amanda, 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 don't bite your nails. Amanda, don't do this. Amanda, don't bend your shoulders. Amanda, do your homework. So you know there is that command, and whenever we are dealing with the command, and as per the reported speech, it comes under what, like, or as per the very rules in English, it comes under your imperative sentences. ठीक है? क्या होते हैं imperative sentences? जिसमें मैं order देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं request करती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं plead करती हूँ, या फिर मैं command दे रही हूँ, ठीक है, so those are, और advice दे रही हूँ, तो वो सब क्या होते हैं? मेरे commanding sentences होते हैं. तो Amanda के साथ exclamation का वही रोल है जो लिखा गया है by रॉबिन क्लाइन. ओके रीना, डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम श्योर आपने पढ़ाई तो करी ही होगी, क्योंकि एन मिनट पे पढ़ाई करके तो एनीवे कुछ नहीं मिलता है. तो डरो मत आप, जस्ट कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने जितना किया है मुझे आता है. All right, everyone. A man has an exclamation and emphasize the frustration that the mother of the. Very good, Sanjeev. Very nice. I love it. That was a quick answer. Very nice. Very nice. ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं. ये हमारा है बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट, एक स्टेंजा. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन स्टेंजा है बेसिकली. Now, herein you see that the instruction is being given by the mother. All right, she is asking Amanda not to eat chocolate because of the acne that she had in the past. Okay, the word remember has got a value here. By because she is saying कि याद है ना तुम्हें वो जो तुम्हें acne हुए थे. So that means that we are not talking in the context of the present. Instead, we are talking about something that happened or that hampered her physical beauty because there were acne on her face. ठीक है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ? तो आप जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो क्या है? तो रीना, डरने वाली कोई बात नहीं है, यू आर गुड टू गो. क्वेश्चंस देखो. व्हाई इज अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर? ठीक है, अमांडा क्यों नहीं देख रही है स्पीकर पे, आई मीन स्पीकर को. फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस सेम एज कंज्यूम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये बात कि vocab जो है ना वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. Like that is really the brahmastra for writing a good answer or for forming a good sentence. All right, then the speaker is so worried about acne. What does it show? ये भी एक बहुत important question है. And which word in the extract means the same as to gaze? ये question आपके cbse 2016 में आया था. And all these questions are important. One tip right here, listen to me carefully. पूरे अच्छे से ध्यान से सुनो. That is, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, आंसर सेम टेंस में करोगे आप. इफ यू आर नॉट आंसरिंग इन द सेम टेंस, देन दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर मार्क ऑलरेडी. ठीक है, आपका मार्क डिडक्ट होगा. मैंने यहाँ पे पूछा व्हाई इज अमांडा नॉट लुकिंग, यहाँ पे मैंने टेंस कौन सा देखा है? मेरा प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है. आई विल बी नाउ गिविंग एन आंसर इन द प्रेजेंट टेंस ओनली. Also, you have to, second point, you have to take care of the vocabulary. You have to be sure whatever spelling you are writing, that is absolutely correct, and you're using the contextual word. Okay. Third point is that you have to be sure that you are maintaining the punctuations correctly. Okay, that's a very important point. And the fourth point, please maintain the word limit. If it's a one marker question, make sure you're writing it in just one single sentence. Okay, and nothing more than that. If you're doing that, you're gonna lose your mark. If you've got a doubt, dear, only medical आपका spelling doubt का गलत है, it's DOUBT. Okay, and if you have doubt, then you can directly let me know about this. All right, Pihu, I got that. Okay, yeah, I'm gonna come up, Zoro, I'm gonna come up with that too. Yeah, she was dreaming at that particular time. Yeah, Pihu, I got that. चलिए अब answers क्या है? Answers है Amanda is lost in her own thoughts and is paying no attention to instructions being given to her. Okay, that is why she is not looking at the speaker. So 1 mark in. I have kept it to the brief. I'm just giving an answer to the point. I hope, guys, I'm sorry there was a little network issue, but I hope that I am now pretty clear, like
clearly visible to everybody right in there. Now, mysterious मुंडा, बेटा पहली बात तो समरीज तो हमें आंसर्स में लिखनी नहीं होती है. No teacher is ever going to give you any marks for the summaries because summaries are already known to us. Summaries are known to your teachers as well. They are not going to like at all entertain your summary. You have to provide the answer जो पूछा जाता है उसको एक तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है. मैं आपको वही तरीका यहाँ पे सिखा रही हूँ. आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दो. आप कुछ भी मत लिख के आओ. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अमेंडा उस वक्त क्या कर रही थी, आप बता रहे हो कि वो क्या कि उसकी मम्मी क्या कर रही थी. तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस ना. आपको वही देना है. मैंने बहुत बार बच्चों को ये बताया है स्पेशल क्लासेस में. मैं बहुत बार ये बात रिपीट करती हूँ. हम वही लेते हैं जिसकी हमें नीड होती है. यानी कि आपको जिस चीज की डिमांड है आपको दुकानदार वही सप्लाई करता है. ठीक है, दूध लेने जाओगे 1 किलो दूध ही चाहिए घर में तो 1 किलो दूध ही आपको मिलेगा ना. सिमिलरली अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई इज अमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर, तो आंसर यही दो ना कि वो क्यों नहीं देख रही थी. आप ये क्यों बताने लग जाते हो कि अमेंडा क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड थी, उसको कभी क्या कहते हैं फ्रीडम चाहिए थी, उसको ये चाहिए था वो चाहिए था. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ऑल राइट, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेल. ओके, इज दैट क्लियर? All right, viewers. So if you are done with your English examination, good. Then go and prepare for the other examination. I'm sure you want to pass in that too, right? You have no like plans for flunking in that examination, if I'm not wrong, right? Go and study well. Anyway, coming to the third question. Speaker being worried about acne. Okay, what does it show? It is one of the very important points in the given poem. It shows how much importance is given to the physical beauty in a household. मतलब आपकी बाहरी सुंदरता को एक घर में कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. Amanda is prepared for the unforeseen future. Amanda को हम प्रिपेयर करें कैसे फ्यूचर के लिए जो उसने अभी देखा नहीं है. नेचुरल एक्सपीरियंसेस, जो नेचुरली चीजें होती हैं जैसे कि एक्ने इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ एट एनी कॉस्ट. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? Spammers are not allowed in my class, dear. Go and just spam somewhere else. Okay, good luck. Have a good day. Anyway, so we see now the D option. To look means to gaze. To look का क्या मतलब होता है? Gaze करना. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why does Amanda seem moody most of the time? अब ये क्वेश्चन है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2016 में भी ये पूछा गया था. एक तरीके से ये आपका PYQ है. ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो क्यों लगती थी मूडी. ठीक है, अब आपको जो इसमें आंसर में लिखना है ना, आपको ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीम्स मतलब कि वो लगती थी, वो थी मूडी नहीं, वो लगती थी मूडी. ओके, क्यों? Amanda seems moody most of the time because she is trying to make an escape from her sorry reality. वो एक कोशिश कर रही है कि वो अपनी sorry reality, what does this mean? Means sad reality. Okay, so she was making an effort to get out of the sad reality where she's nagged most of the times. I mean that she's being instructed for a lot of things a lot many times. It is indeed a sorry state. Indeed matlab yes, factually it is a very sorry state for a small child like Amanda to bear. ठीक है, वो एक छोटी सी बच्ची है. We are not, she is just a little child. ठीक है, we are not even going to keep her into the teenage field. All right, she is just moving towards the teenage. ठीक है, so here the only defense क्या होता है? only way. ठीक है, जो उसका खुद का तरीका उससे बच निकलने का. तो द ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी, इस रियलिटी के अगेंस्ट जो सिर्फ डिफेंस उसका था वो क्या था? उसका खुद का इमेजिनेशन, वेयर शी ऑफन एस्केप्स टू. तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर गोना राइट, दैट शी सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज ट्राइंग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्राई कर रही है, वो कोशिश कर रही है अपनी रियलिटी से एस्केप करने की. ठीक है, हेंस. तो देखो हेंस जैसे ये वर्ड्स होते हैं, हेंस हो गया, दस हो गया, देयरफॉर हो गया. ऑल राइट, ये सारे वर्ड्स ना ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं हमें. ट्रांजिशन मतलब आप अपनी एक बात से फाइनली कंक्लूजन पे अगर आ रहे हो तो वहां पे हम हेंस दस देयरफॉर लगाते हैं. एंड ऑलवेज आफ्टर देम यू हैव टू यूज अ कमा. दैट्स वन ऑफ द राइटिंग थिंग्स आई एम टेलिंग यू. हेंस इट मेक्स हर लुक मूडी एंड अनइंटरेस्टेड. इसलिए उसको देख के ऐसा लगता है कि वो मूडी है और अनइंटरेस्टेड है. दैट इज व्हाट यू आर गोना राइट इन योर आंसर. Okay, an important question it was. State the key points in the poem Amanda. What do you learn from it? Come on quickly guys, may I have the answers from you in the comment section. बताओ क्या मेजर पॉइंट्स हमें Amanda poem में मिले हैं, आपको क्या उससे लर्निंग मिलती है?
Come on, try to tell me an answer. Why we use animal as slang language, whereas we learn something other from tiger? I didn't get your question. Like there seems to be something wrong with the question. Why were use animal as slang language, whereas we learn something other from? I'm not getting your question. Just reframe the question. What are you exactly trying to say? ठीक है अमेंडा, हमें ज्यादा किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा हो तब भी एडवाइस ना दें, बच्चा कैसे समझेगा? एक छोटे बच्चे को गलत या सही की समझ कहाँ होती है? देखो अमेंडा इज अ पोम, ओके, विच इज टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट ऑफ अ लिटिल गर्ल. She was not mature enough to understand the value of instructions and restrictions put by the parents. The parents, if they restrict you to do something, that's for your welfare. If they instruct you to do something, that is again for your welfare. A child can never learn, अगर मैं एक बच्चे को नहीं बताऊंगी कि बेटा आपको अपना टीथ कैसे ब्रश करना है, वो कभी नहीं पता चलेगा उसको. तो अल्टीमेटली द फर्स्ट लर्निंग कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, नो? The parents are the first teachers in your lives. So, what are the real things that we understand and what are the real things that we get from this chapter? Children have these habits because they want freedom. Okay, all right, Sunlight, you're gonna do well. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. Okay, all right, chalo, very good. देखो, आप इसका जो आंसर है वो ये है. ये थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्कर है और बेसिकली आपकी कैटेगरी में आ जाता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में. ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की, क्वालिटी की कुछ बात कर रहे होते हैं, इन जनरल बात कर रहे होते हैं. तो आपको जब ऐसे 5 मार्कर्स को लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, आपको मेंटेन करनी होती है लिमिट, लाइक 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट या मे बी 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट. यू हैव टू ऑलवेज सी, आपको हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में ये देखना है कि वो कितना वर्ड लिमिट डिमांड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर भी दिया करोगे. ठीक है, yeah, we can take the nagging. Rahita, you have to be mature enough to take the nagging as like something which is like positive. Okay, so this is what we see in this particular chapter. तो ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें आपको हमेशा आंसर जो है ना वो एक फिलोसफिकल मैनर में स्टार्ट करना होता है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. ठीक है, और उसके बाद आपको फिलोसफिकल मैनर में स्टार्ट करके आपका जो मेन पोम या जो चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको अपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट को उससे रिलेट रखना है. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. हे नवनीत, वेरी गुड आफ्टरनून. अब यहाँ पे देखो, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन इटसेल्फ. हर बच्चा अपने आप में बहुत स्पेशल है एंड इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड लव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मतलब क्या है कि अब बच्चों को ना हमें कुछ समझाने के लिए हम लोगों को, बीइंग द अडल्ट्स, हम लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा प्यार की भी जरूरत होती है उनको समझाने की. पेरेंट्स शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू चिल्ड्रन. पेरेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा समझने का टाइम दे, एज द लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल. ठीक है, उनके साथ जैसे जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल मम्मी बोल रही बेटा पढ़ लो, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे यूटी में, तो बच्चे ने नहीं पढ़ा, अब वहाँ पे उसको शेम शेम फील हो रहा है. वाई? क्योंकि उसके फ्रेंड के तो आ गए 20 on 20, उसके आए 10 on 20. तो वहां पे उसको ये एक्सपीरियंस हुआ, तब उसने ये रियलाइज किया कि हाँ, आई शुड हैव स्टार्टेड. ठीक है, so children tend to learn certain bad habits. To undo that requires great level of understanding and right approach. बच्चे कुछ कुछ bad habits अपना लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लेट के बहुत देर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है, या फिर हम बिल्कुल भी आर जस्ट ईटिंग एंड स्टारिंग टुगेदर. ओके, सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. ओके, इफ यू आर ईटिंग यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग, बिकॉज लाइक हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट. Then when you have your reading time or your studying time, do that appropriately. Do not mix match the things. Do not just study while watching the TV. So one cannot teach their child everything in one day and expect them to behave properly henceforth. Henceforth मतलब वहां से. It is natural for a child. अब देखो, मैंने यहाँ पे आके लिंक करना स्टार्ट किया. मैंने पहले एक बेस बना दिया ऊपर से, जो मैं लिंक करते हुए आई हूँ. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आंसर लिखने हैं. ये तरीका होता है इंग्लिश में आंसर लिखने का. तो अब मैंने बोला है कि ये भी बहुत नेचुरल है एक बच्चे अमेंडा की तरह टू सीक फ्रीडम. सीक मतलब टू लुक फॉर. ठीक है, कि मुझे ढूंढ रही है वो क्या, फ्रीडम, आजादी. एट हर प्लेस टू कर्ब दैट फ्रीडम. कर्ब मतलब कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल, टू कंट्रोल दैट फ्रीडम मीन्स टू मेक हर एंग्री एंड मूडी. तो अगर उस फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है तो वो चिड़चिड़ी और थोड़ी मूडी सी हो जाती है. नाउ
Growing up of a child should not be about do's and don'ts only. To have nagging parents judging every action of a child would do more harm than good. ठीक है. सो रॉबिन क्लाइन, अब मैंने यहाँ पे क्यों मैं कहती हूँ कि पोएट को भी बीच में लेके आना होता है हमें, जिससे कि हम अपने आंसर को प्रेजेंटेबल और वर्दी बना सकें. So Robin Klein points to the fact that Amanda is forbidden to do anything. मतलब forbidden मतलब prohibited. She is not allowed to do anything without seeking permission. बिना permission के. Everything she does, it is corrected by her mother all the time. जो भी वो करती है उसकी मम्मा उसे ठीक करती है हमेशा. ठीक है. She cannot perform a single thing according to her will. वो एक चीज नहीं कर सकती अपनी मर्जी से. She can't sit lazily around. वो मतलब lazily कहीं पे बैठ नहीं सकती है. She can eat chocolate. Chocolate नहीं खा सकती है. For that could cause acne. क्यों? क्योंकि उससे acne हो जाएंगे. So life of Amanda is very suffocating. तो कैसी लाइफ है अमेंडा की? अमेंडा की लाइफ बहुत ही suffocating है और limited in itself. ठीक है. So she yearns मतलब जब आप crave करते हो कि मुझे चाहिए ये. So she is yearning for freedom and choice as well. That's what you have to remember. ठीक है. Her mother doesn't understand the fact that Amanda is innocent. ये continuation है इस आंसर का. All right. So her mother doesn't understand. उसकी मम्मा ये समझती नहीं है कि वो बहुत innocent है और naive. Naive is also another word of innocent. She is too small to understand the benefits of advice. वो बहुत छोटी है advice के benefits समझने के लिए. Only thing that matters to Amanda's mother. क्या चीज उसकी मम्मा को matter करती है? What society will make of Amanda. That means what society will think of mother by looking at Amanda. तो वी विटनेस, हमें वी एज रीडर्स हम क्या देखते हैं? मिजरेबल, बहुत बुरा, फेलियर किसका? पेरेंट्स का. व्हेन अमेंडा विशेस टू बी एन ऑर्फन सो दैट शी कुड बी फ्री. जब अमेंडा ये विश करती है कि वो एक अनाथ हो जाए जिससे कि वो आजाद हो सके. So that's what you have to write here in this particular answer. No, we have got all the poems, okay, that are a part of your basically half yearly examination. Now we are coming to the next part. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे भी अब क्वेश्चंस आए हैं. आपके जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें एक चीज हमें हमेशा देखने की होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है, you have to always give the answer of any of the question which is from extract on the basis of that extract. उसके आगे पीछे के स्टेंजा के बेसिस पे आंसर मत देना. इट्स ऑल पॉइंटलेस. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर ए. Amanda is getting instruction for what purpose? किस पर्पस के लिए मिल रहा है? उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन. जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में. सिनोनिम देना है हमें एक हंच का. What does the speaker of above lines instruct Amanda in the first stanza? ठीक है. क्या इंस्ट्रक्ट है कर रहा है? एंड व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस? लिटरेरी डिवाइसेस दे आर द utmost important thing. ठीक है. सो यू शुड नो दैट. All right, answers. Amanda is getting instruction as a part of her upbringing. Her conduct and manners are getting refined for future purposes. Bend word है. I'm sorry, मैंने यहाँ पे सिर्फ word लिख दिया. मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए उसका अगर एक one word आंसर है तो आप उसको पूरा सेंटेंस में लिखो. आई एम सॉरी, यहाँ पे जस्ट सिंगल वर्ड है. डोंट बाइट योर नेल्स. ठीक है संजीव पीहू, वेरी गुड अमेजिंग फैक्ट्स. यू आर टोटली राइट अबाउट दिस. ठीक है, बिल्कुल सही. Now, see, Amanda is getting instructed for biting her nails and sitting lazily with her shoulders bent. Okay, so now we see literary device used in the third line is alliteration. Alliteration क्या होता है? यहाँ पे S sound repeated है. दिख रहा है आपको? S sound repeat हो रखा है. All right, stop that slouching and sit up straight. Next question, everybody. Again, an important thing. Alrighty, let's have a look at it. Yeah. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Why are these lines given within brackets? A very important question. Alrighty. Slouching का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ सब लोग. बहुत easy है. मैंने अभी बताया. संजीव, आपको तो पता होना चाहिए बेटा, आप तो एग्जाम दे के आए हो. Slouching? What do you mean by that? Stop that slouching. लाइन से मतलब निकालो. लाइन से मतलब निकालो संजीव. Stop that slouching and sit up straight. क्या बताया गया है यहाँ पे? This is the meaning of slouching. Okay? No.
सिटिंग लेजीली, ठीक है। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब कि बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं, आलस फैलाते हुए मत बैठो। ऐसा होता है ना कि हम कभी बेड पे लेटे हैं तो मतलब एक तो होता है सोना, एक होता है सोफे पे बैठना, फिर बैठे बैठे लेट जाते हो आप, तो यू आर completely into that lazy tone. You are like, you अगर your mom is calling you from the kitchen to just get the breakfast on the very dining table, so you are like, okay mama, I'm coming, and you are like, you are lazily just moving like that. Okay, no, it's not bending forward सुरेंद्र, no बेटा नहीं, ठीक है। सिटिंग स्ट्रेट नहीं बेटा नहीं, सीधा तो वो बैठ ही नहीं रही थी, उसकी मम्मी क्या उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी कि स्टॉप सिटिंग लेजीली, ऑल राइट, स्टॉप सिटिंग लेजीली एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके संजीव, ऑल राइट, ठीक है, आई होप अब तो क्लियर है, राइट। ओके, या कूल। चलिए अब क्वेश्चन हैं कि ये ब्रैकेट में क्यों दे रखा है। सेकेंड है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन एंड फोर्स। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ मरमेड हेयर, मरमेड का यहाँ पे क्या रोल है। एंड फोर्थ इज, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ऑपोजिट ऑफ सोरोफुल, कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट में बता रहा है जिसका मीनिंग है जो ऑपोजिट है सोरोफुल का। Alrighty, no worries, Pihu. Okay, cool, cool, Surendra and Sanjeev. So these lines are given within brackets because they reveal. Reveal मतलब show कर रहे हैं. क्या show कर रहे हैं? Inner thoughts of Amanda. So whatever she's thinking. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस फॉर्म में देखोगे कि ब्रैकेट्स में चीजें दे रखी हैं, तो ब्रैकेट्स में क्यों दे रखी हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं क्या, इनर थॉट्स अमेंडा के, कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है। ब्रैकेट्स आर यूज फॉर, सो ब्रैकेट्स आर यूज फॉर विजुअल कंट्रास्ट। विजुअल मतलब देखना, लुक, मतलब द सीन्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट अमेंडा इज सेइंग एंड व्हाट हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। नाउ ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, टू मीन्स फ्री फ्लो एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन, ठीक है, दैट इज व्हाट ड्रिफ्टिंग इज। नाउ मरमेड इज अ पार्ट ऑफ अमेंडा's फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, in her own created world, as mermaid sails in a sea carelessly and effortlessly. Similarly, Amanda longs to do so in a place where she is all by herself. So blissfully is the word opposite of sorrowful. Okay? Yeah, green beast, you're absolutely right about this. Okay. Now, I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. How come silence is golden? Give a synonym of roaming. What is Amanda up to in this stanza? What poetic device is used in this stanza? Very important. चलिए आगे चलते हैं. Silence is shown golden using the poetic device metaphor. याद रखो. Because silence has been indirectly compared to be as precious as gold is. Okay, by making silence golden, the poet is estimating the worth of silence. यानी कि वो क्या estimate कर रहा है कि जो silence है वो बहुत important होती है. For Amanda seeks peace and calmness which is absent in her reality. क्योंकि Amanda क्या ढूंढ रही है? वो ढूंढ रही है शांति और सुकून, ठीक है, जो उसकी असल जिंदगी में बिल्कुल गायब है ही नहीं। वॉन्डरिंग है दूसरा वर्ड, ठीक है, उसका, और ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, वॉन्डरिंग। वेरी गुड, अमेजिंग फैक्ट्स, वेरी गुड मेरा फॉर जानवी, वेरी नाइस। Okay, very nice. No, Sajal, not really too much. You're good to be here. We have the session going on. Then Amanda is again taking refuge in her imagination. Here she wishes to be an orphan away from her nagging parents. Amanda wants to roam aimlessly in streets and draw patterns using just her bare feet. Her feet yani bare, naked. Okay? Now, the poet uses metaphor as orphan, silence is golden and freedom is sweet. ध्यान रखो. All right. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Is Amanda really sulking? क्या Amanda सही में sulk कर रही है? ये question बहुत important है. ठीक है? Because she doesn't sulk. She appears to be sulk. आपको जो इस आंसर में लिखना होगा ना word, वो होगा appears to be. कि वो actual में sulky नहीं है. वो ना बस ऐसा लगता है कि वो है. ठीक है? Now,
Why does the speaker care for others? स्पीकर को क्यों चिंता है दूसरों के बारे में? Give the word from the passage which means same as unstable. तो word दो एक passage से जो same है unstable जैसा, और poetic device बताओ जो first two lines में use की गई है. क्या use किया गया? Appears to sulk. Very good. Yeah. So Amanda is not sulking. She just doesn't care about instructions given to her as she is lost in the world of her own. Simple. Now, the whole poem revolves around the aspect that how one is presented in the society. Speaker doesn't wish to be regarded as a nagging parent in the society, so Amanda is expected to put up a happy face all the time. Moody means unstable. Okay, and alliteration has been used in the first line. Words stop and sulking start with the same sound. Alrighty. Reena, Pihu, sulking का मतलब होता है that appears to be like a little moody and irritable. Okay, that is what it means. Yes, Green Beast, absolutely right. You're right. Okay, she just appears to be sulking, but she is not sulking. Okay, and she appears to be like that because she's lost in her own world of imagination. That's what you're supposed to write. Okay, next. How does Amanda tackle the nagging nature of her parents? Explain with examples from the poem. What values does it portray about Amanda? A very important question, a long answer question. ठीक है, इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें ना ये एक तरीके का कैरेक्टर ही है अमांडा का. ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला है कि हमें कैरेक्टर एनालिसिस भी सारे कैरेक्टर्स के करने ही होते हैं. तो यहाँ पे इन अ वे ये उसका तरीका है. नैगिंग मतलब कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देना. ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देना नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल योर एल्डर ब्रदर इज लाइक यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो ये लाइक स्टॉप नैगिंग मी. दैट मीन्स मुझे इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर. लाइक दैट. Okay, Nick, I hope you got that. So Amanda is a small girl who is termed as moody for her careless behavior. ठीक है, termed as. मैंने यहाँ पे क्या उस जिसे बोला जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि वो है moody. Okay, but it is very surprising to know, लेकिन ये बहुत surprising है पता करने में, that this is her defense mechanism. ये उसका तरीका है अपनी reality को झेलने का. ठीक है, this is a defense mechanism to shield against her nagging parents. Shield मतलब एक प्रोटेक्शन मिले उसको खुद को. ठीक है, अपने nagging parents के against. So Amanda is getting instructions from her parents which become too much to handle for the small girl. She is told not to eat her nails and sit in a proper position. Amanda's response to it is her work of. देखो आप यहाँ पे आंसर देख रहे हो मैंने किस तरीके से लिखा है. मैं यहाँ पे समरी नहीं दे रही हूँ आपको. मैं ये समरी नहीं दे रही हूँ कि पहला स्टैंजा ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड स्टैंजा में ये हुआ, फिर थर्ड में ये हुआ. नहीं, आपको ना हमेशा वर्ड्स इस तरीके से लिखने होते हैं कि मुझे ये समझ आए, टीचर को ये समझ आए कि आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हो. आप मुझे समरी नहीं दे रहे हो. समरी बेटा मुझे पता है, टीचर को बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, लेकिन हमें ये देखना है कि आपको क्या पता है. तो आंसर को इसी तरीके से आप क्या कहते हैं फॉर्म करोगे. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, amazing facts. You are right about that. All right, guys, let's not get into the date of the boards right now because we don't know yet till it's a proper official notification. All right. So just wait for the official proper notification and then we are gonna just see from when the boards are coming up. Okay. All right. So यहाँ पे अब मैंने क्या बोला देखो, she is told not to eat her nails and sit in a proper position. ये इंस्ट्रक्शन मिली है. तो इस इंस्ट्रक्शन पे उसने क्या सोचा? Amanda's response to it. तो मैंने कैसे लिखा कि Amanda का response इस इंस्ट्रक्शन पे क्या था? It is her work of imagination. यानी कि उसने सोचा. वो क्या सोचा? Where she is a mermaid. तो वो एक mermaid है. ठीक है. Drifting effortlessly by the languid. Languid है relaxed water. ठीक है, relaxed water. All right. Further, आगे जाके हम क्या देखते हैं? She is asked about cleaning her room and finishing her homework, to which she reacts. देखो मैं किस तरीके से words use कर रही हूँ. To which she reacts, being an orphan, roaming in the street and making patterns. Patterns मतलब drawings. ठीक है, with her bare feet on the dust.
ओके। अमेंडा देन उसके बाद अमेंडा फेस करती है हीट, अमेंडा फेसेस द हीट फॉर ईटिंग अ चॉकलेट, मतलब डांट मिलना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे बैठी हूँ और मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि क्या कर रही है, तो मैं ये बोलूंगी दैट आई जस्ट फेस द हीट ऑफ ईटिंग टू मच और वॉचिंग टू मच टेलीविजन, मतलब मेरे को डांट पड़ी है घर पे बहुत ज्यादा टीवी देखने के लिए। All right. Is that clear, everyone? Yeah, I know Green Beast. I know about that too. All right. Like 15th Feb, everybody. I mean, that is what the things are. But let's wait. Let's wait almost till maybe like towards the end of this year. We'll be getting the actual official confirmation. All right. Now, we see that witch had once called her Acne. So she takes the form of Rapunzel and wishes to live on top of a tower, away from everyone, apni imagination. So Amanda's parents are upset over her behavior and casualness, but she stays in her own world. All these portray Amanda in a positive light, while her parents in a negative light. We as readers feel sorry for a child like Amanda. आपको ये आंसर देना है उसको, ठीक है? क्लियर? अभी तक जो मैंने आपको बताया है आपको सब समझ आ गया है? प्लीज मुझे कंफर्म करो कमेंट सेक्शन में। Yes, everyone. Is this clear to everybody? चलिए, वेरी गुड। इन विच वे डज अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी मरमेड? किस तरीके से वो अपने आप को मरमेड होना इमेजिन करती है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन बस। मरमेड इज बिलीव टू बी अ क्रीचर with a women's head and body and a fish tail instead of legs. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, क्योंकि ये बेसिकली एल्यूजन है, ठीक है? एल्यूजन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है। मैंने जब फॉर्म समझाई थी आप लोगों को, ये मैंने अच्छे से बताया था। So Amanda imagines herself or wishes to be free like a mermaid, which is moving slowly in a state of a bliss in the sea, which is green like an emerald. ठीक है, यहाँ पे भी आपका बेसिकली क्या आ रहा है? एमरल्ड, मतलब द कलर ऑफ द सी हैज बीन कंपेयर टू द कलर ऑफ द स्टोन एमरल्ड। ठीक है, ये आंसर आएगा टू द पॉइंट, यू आर गुड टू गो, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है हमको। नेक्स्ट, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमेंडा आफ्टर रीडिंग द पोएम अमेंडा? यानी कि एक तरीके से कैरेक्टर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपने क्या इंप्रेशन बनाया अमेंडा का पोएम रीड करने के बाद। ऑलराइट, so Amanda क्या है? She feels suffocated because she is controlled and instructed not to do one thing or the other. कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी किसी आंसर में समझने के लिए कि क्या आंसर बोलना चाह रहा है, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट। तो शी फील्स दैट हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब क्या है? कंट्रोल। उसे ये लगता है कि जो उसकी फ्रीडम है ना, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बट अमेंडा विशेस टू बी फ्री टू लिव इन हर ओन वर्ल्ड। बट अमेंडा क्या चाहती है कि वो फ्री है अपनी खुद के वर्ल्ड में। शी इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, वो बहुत सेंसिटिव लड़की है। हु इंडल्जेस इन डे ड्रीमिंग, दिन में ही वो ड्रीम कर रही है ना, क्वाइट ऑफन, ज्यादातर हम उसे दिन में ही ड्रीम करते देखते हैं। तो शी हाईली वैल्यूज साइलेंस और फ्रीडम, मतलब उसको वो बहुत ज्यादा वैल्यू किसको देती है? साइलेंस, चुप्पी को, ठीक है? और किसको? बेसिकली क्या कहते हैं? आजादी को। इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? आपका जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जो क्वेश्चन आपका आंसर डिमांड करते हैं येस और नो में, आप हमेशा स्टार्टिंग में येस और नो लिख के अपना जस्टिफिकेशन दोगे। अगर आपने नो लिखा है तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हो नो के बेसिस पे। अगर येस लिखा है तो मेक श्योर आप येस के बेसिस पे जस्टिफाई कर रहे हो। या ममता, देयर वुड बी ओके। Alrighty. Hi, Rohit. A very good afternoon. Yeah, amazing facts. You were right, Mamta. We have a good amount of questions to go. Okay, the session is going to be a little longer than usual. Alrighty. Okay. Now, no, Amanda is not an orphan. She says so because she wants to be alone and enjoy being herself. She wants to roam around in the street alone and pattern dirt with her bare feet. She finds silence golden and freedom sweet. It is for this reason that she calls herself an orphan. यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ वो नहीं दिया, समरी नहीं दी, मैंने सीधा क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है कि मैंने जो क्वेश्चन ने पूछा वही आंसर दिया। ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे कि टेंस में मेंटेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? इज लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? डस के साथ से लिखा आ रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो आंसर में भी आप प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कि हम कौन कौन से वर्ब्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो आपको ये अच्छे से दिख रहा है। इज यहाँ पे आया, सेज मैंने यहाँ पे किया, वॉन्ट्स यहाँ पे किया, शी वॉन्ट्स यहाँ पे किया,
finds यहाँ पे किया, is यहाँ पे किया. So I am maintaining, all right, I'm maintaining the consistency well. Maintaining the consistency is very important, because a teacher like who is checking your answer may deduct your mark, because that is also one of the major things. Like she might do this or she may not do this. I'm not really sure, but like the actual rule says that your marks must be deducted if you're not maintaining the tense consistency. ऑलराइट. बेयर फीट, बेयर होता है बेटा लाइक नेकेड, ठीक है. तो नेकेड फीट मतलब विदाउट एनी स्लीपर्स, विदाउट एनी शूज, तो मतलब कि नंगे पैर. Okay, is that clear? Because she's suffocated. Yes, that's right. Amazing fact. I appreciate. Very good. Next question. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Very important. Again, यहाँ पे ये illusion है. तो यहाँ पे क्या आंसर है? रेपुंजल वॉज अ माइथोलॉजिकल फिगर थी वो, विच वॉज एब्सोल्युटली सॉरी हु वॉज एब्सोल्युटली केयर फ्री थी, लीडिंग अ काम जिंदगी और क्वाइट जिंदगी बिता रही थी वो एक टॉवर में. अमांडा विशेस टू लीड अ केयर फ्री काम एंड क्वाइट लाइफ लाइक रपुंजल. ठीक है, तो वो भी एक ऐसे क्वाइट लाइफ जीना चाहती है रपुंजल की तरह. दैट्स इट. Now we are coming to our next poem, everybody. I hope आप लोगों को सारे questions समझ आ गए हों. All right, not sandals, not exactly the sandals. It just means that nothing, having nothing in your feet. I mean, no shoes, nothing. Hi, Aarti. चलो बताओ इस poem में क्या दे रखा है? The Tale of Custer the Dragon by Ogden Nash. The Tale of Custer the Dragon by Ogden Nash. Yes, Obes Chaudhary, you're right. So this is about a dragon, right? चलिए अब हमारे RTCs. Belinda paled and she cried, "Help, help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little house blinked strategically mouse hole. ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके CBSE 2016 में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. All right. So we see that how did the people in the house react on seeing the pirate? Pirate को देख के लोगों ने कैसे react किया? Did आ गया. सबसे पहले देख लो कि आंसर कैसे लिखना है. Why did everyone cry for help? सब लोग क्यों रो रहे थे help के लिए? What does mouse hole mean? Mouse hole का क्या मतलब है? Write the antonym of bottom. Simple question. So Belinda became pale. Pale मतलब उसका मुंह ना एकदम से पीला पड़ गया. क्यों? क्योंकि डर के मारे. All right, it was because of fear, and Mustard fled the scene. Ink went to the bottom of the house, and Blink vanished in a mouse hole. So they all cried for help. ये scene था. Everyone cried for help because they got frightened of the pirate. Now, mouse hole has been used by the poet to mean the hole made by the mouse in which it disappeared. Please note, mouse hole is not any word given in any of the dictionaries. Okay, this is just one of the words created by the poet himself as a means of creating the rhythm in the poem in order to just maintain the rhyming effect. Okay, so mousehole is just one of the words which has been created by the poet himself, and it comes under the category of your poetic license. Okay. बेटा ट्रीज बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी तो नहीं. ऑल राइट. नाउ वरुण, स्ट्रैटेजिकली मतलब मीन्स स्ट्रैटेजी के साथ, एक तरीके के साथ, एक प्लान के साथ. स्ट्रैटेजी मतलब प्लान. ठीक है, तो यहाँ पे जो वो ऐसे बोलते हैं ना कि एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल. ऑल राइट, यानी कि वो एकदम फटाफट से अपना प्लान करते हुए, अपनी जान बचाते हुए वो फटाफट से अपने होल में चला गया. दैट वे. All right, PU, I'm coming to that, dear. I'm coming to that, okay? Now, antonym of bottom क्या है? Brim. Please remember, कभी भी ऐसे आंसर्स लिखते हो ना जब कोई पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है, तो आप उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो. All right, you can always do that. Yes, yes, वो भी होगा PU. What did custard look like? Important question. ठीक है, ये क्या है? कस्टर्ड, व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये CBSE 2016 में कराया गया आया था. ठीक है, नाउ दिस इज कस्टर्ड लुक्ड लाइक डेंजरस. ठीक है, विथ स्पाइक्स ऑन हिज टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ. ये इंपॉर्टेंट है.
मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा रखी है बच्चों, अगर आप मेरी क्लासेस रन कर रहे हो, कि हमें जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं ना कैरेक्टर्स के, वो हमें हमेशा याद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको उससे रिलेटेड जब आंसर आता है, आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको वो अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो कस्टर्ड लुक्ड रियली डेंजरस, कस्टर्ड बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था, उसके स्पाइक्स थे टॉप पे, ठीक है, और ना यहाँ पे स्केल्स थे अंडरनीथ। हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह था ना वो आग की तरह था, एंड नोज चिमनी की तरह, बिकॉज वहां से स्मोक पास आउट होता था, एंड हिज टोज लुक लाइक डैगर्स। 2 मार्क्स का आंसर है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, समझ आया? इज दैट क्लियर? हे अंकित, हाय डियर। हाय शिवम, हेलो। दिव्यांशु, नो आइडिया बेटा, एक बार प्लीज चैनल पे देख लो, शायद शाम को 5 बजे होगी शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लो प्लीज। ऑल राइट, ओके, चलिए आगे चलते हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। हु इज कस्टर्ड? व्हाई डिड ही क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। सीबीएसई 2014 में भी आपसे पूछा गया था कि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो कस्टर्ड कौन है और वो क्यों मतलब रो रहा था एक नाइस सेफ केज के लिए? ऑल राइट, समझ आया? आप देखो, कस्टर्ड जो है वो बेलिंडा का पेट ड्रैगन है। He cried for a nice safe cage because he was a coward who feared easily and looked for comfort and safety of himself. That's it. All right. Is that clear? समझ आया? Now, the dragon custard was considered a coward. जो dragon custard था वो एक coward consider किया गया था। ठीक है, the humble dragon proved his bravery in adversity. यानी लेकिन जो actual में adversity मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी क्या होता है कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम आई उसी ने ब्रेवरी दिखाई। एनालाइज दैट क्वालिटी, तो हमें एनालाइज करनी है उसकी वो क्वालिटी, जैसे कि ब्रेवरी है और करेज है। ये सिचुएशनल है और स्पॉन्टेनियस है। एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोम। अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ऑल राइट, ये हमें जरूर से समझ आना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज का डिमांड हो रहा है। ऑल राइट, देखो अब आपको कैसे आंसर लिखना है इसका। Custard's humbleness won every reader's heart. Okay, as he showed true bravery. असली में उसने bravery दिखाई and did not boast like Belinda and other pets. Belinda और बाकी सबकी तरह तो उसने मतलब ऐसे नहीं दिखाया ना कि वाह मैं ये कर सकता हूँ, वाह मैं ये कर सकता हूँ। Everyone boasted, boasted मतलब शो ऑफ करना। सबने बोस्ट किया अपनी ब्रेवरी के बारे में, लेकिन जब उन्होंने रियल डेंजर फेस किया, इट वॉज ओनली कस्टर्ड, तब सिर्फ कस्टर्ड था who had the courage to face it, जिसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो फेस कर सके। एंड ही प्रूव्ड हिज ब्रेवरी बाय नॉट रनिंग अवे, और उसने प्रूव करी अपनी ब्रेवरी भाग के नहीं और फेस करके पायरेट को और उसको मार के। Qualities like bravery and courage can only be tested when someone is actually put in a dangerous situation. Therefore, these qualities are situational, as becomes clear from Custer's example. So, Custer looked for comfort all the time, but this did not mean that he was a coward. ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, आपको अपने एग्जाम के लिए लिखना है। सबको क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। Yes, is this clear to everybody? Is that clear, everyone? Now, next thing. रीना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोम है आपके सिलेबस में। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, रीना बेटा क्या हो गया आपको? मैं कह रही हूँ ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन।
ठीक है. Now the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped down some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. So first is, what did the pirate do on seeing the dragon? ठीक है, pirate ने क्या किया dragon को देख के? What did Custard do to the pirate? Custard ने क्या किया pirate के साथ? Which word means the same as swallow? किस word का मतलब है swallow? और फाइंड करो बर्ड एक पैसेज से जिसका मतलब है एक बड़ी बॉटल या फिर सिमिलर कंटेनर विद अ हैंडल इन विच वाइन एक्सेट्रा इज सोल्ड और सर्व. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सारे वर्ड्स का. मैंने ये बहुत बार आपको बोला है कि अगर मीनिंग नहीं पता ना बेटा, एग्जाम में बहुत तकलीफ होने वाली है. सो डोंट लेट दैट तकलीफ कम टू यू, इंस्टेड जस्ट बी बोल्ड इनफ टू जस्ट किक इट अवे. ऑल राइट, एंड बी राइट देयर. चलो देखो अब. Pirate gulped some wine from his bottle. उसने थोड़ा सा वाइन पिया था अपनी बॉटल से. Custard swallowed the pirate and left no trace of him. यहाँ पे वर्ड gobble है और जो वर्ड है लास्ट में वो flagon है. Learn it. Okay. Next everybody. Why did Belinda cry for help? So the correct answer is Belinda was scared to see the pirate. ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, जो क्वेश्चन पूछा है वो तो क्वेश्चन ही आपका पास्ट टेंस में है, तो इसलिए अब मैं आंसर भी सेम पास्ट टेंस में ही दे रही हूँ. ऑल राइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो वी सी बेलिंडा ना डरी हुई थी पायरेट को देख के. हु हैड पिस्टल्स इन हिज हैंड, जिसके उसके हाथ में पिस्टल्स थे. एंड हैड अ ब्राइट कटलेस इन हिज टीथ. ठीक है. There was something bad in his appearance and intention. Therefore, Belinda was afraid of the pirate and cried for help. 2 marks का. ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गया? चलो आगे. What did the custard do at last? Custard ने finally last में क्या किया? All right, तो यहाँ पे भी हमारा past tense है कि custard ने finally last में क्या किया. All right, very important. Custard saved Belinda and other pets from the pirate. उसने उनको बचाया. He showed his braver side. उसने अपना bravery side दिखाया और अटैक किया pirate को and gobbled him up और उसे खा गया. Finally, Custard showed that he was not as coward as others. 2 marks का question, easy to go. Why did the Custard the dragon cry for a nice safe cage? ये एक important question है कि वो हमेशा एक nice safe cage के लिए क्यों रोता था. All right. So आपका आंसर क्या है? Custard in fact was very brave, but still he kept asking for a nice safe cage. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? It made people think that he was a coward. He might be crying for a nice safe cage so that he might not harm anyone when in anger. Or he might be proving that a little safety cage averts to disaster. Averts to disaster मतलब it avoids a disaster. The others thought that he cried for a cage as he was a coward. बाकियों को लगता था कि वो रो रहा था. ऑल राइट, एक केज के लिए. क्यों? क्योंकि वो एक कावर्ड था. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? समझ आया? व्हाट डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स हियर? उन्होंने क्या सुना? इंपॉर्टेंट. Belinda and her pets hear a nasty sound made by the pirate breaking in through the window. Belinda and her pets, except Custard, were terrified. Terrified means like scared. And cried for help मतलब वो चिल्ला रहे थे मदद के लिए. Ink, Blink and Mustard fled away cowardly. Custard fought with him bravely and killed him. All right, is that clear everyone? चलिए. What terrified the pirate? Pirate को किसने डराया? Who killed him and how? किसने उसे मारा और कैसे? All right, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है. So you have to be smart enough to write it in such a way that you are meeting the actual, I mean the actual requirement of it. All right, I mean that you are writing it in the correct manner. That is very very important. देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. Let's have a look at it. यहाँ पे अब क्या होगा. Alrighty, Custard the dragon jumped up. वो jump किया, उसने snort किया and clashing his tail. All right, he was making a lot of clatter and clankering and he was squirming. ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है. He attacked the pirate. उसने pirate को attack किया. It terrified the pirate. उससे वो डर गया. He fired at Custard and missed. Custard killed him by swelling him up. It shows that he was brave. All right.
Is that clear? देखो बेटा, जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब हम आंसर दी ना, आई एम कमिंग टू दैट, पीयू बेटा आई एम कमिंग टू दैट, ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग इन अ chronological manner, आई एम कमिंग टू इट, डोंट बी वरीड अबाउट इट, ओके, आई एम कमिंग. तो इसमें क्या होता है, when you're writing a poem, no, or sorry, when you're writing an answer, no, you have to be always sure of the answer, like the words that are there, the words that are being used in that particular answer, and those words, they should make sense always, and they should be contextual. What I mean by that is, like whatever answer, like whatever words are there in a particular stanza, you are sorry, in a particular chapter related to the particular incident, try to use those words. यहाँ पे आपने देखा मैंने यूज किया जंप, स्नॉट, क्लैश, ठीक है, क्लैटर, क्लैंकर, स्क्वर्म, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है. ऑल राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now the next one. Write the poetic aspect of the poem, The Tale of Custard the Dragon. Very important. In a way, what exactly is it talking about? एक तरीके से ये indirectly poem के style की बात कर रहा है. All right. Indirectly किस चीज की बात हो रही है? We are here indirectly talking about the style of poem. Okay. So we see what exactly does it say? The poem, The Tale of Custer the Dragon, is a light-hearted story. Okay, written in the ballad style. कौन सा style है? Ballad. Ballad is a long poem written in very short stanzas. Okay, it is written in a 4-line stanza format with the rhyming scheme of AABB. ध्यान से ध्यान रखो, rhyming scheme यहाँ पे क्या है? AABB. It takes it near to the heroic couplet. So the poem offers many similes. The stanzas vary in size. The lines are prosaic, all right, and long. The first two stanzas act as refrain to indicate continuity. The words are simple. That's what we see. Now, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. What does this mean? Okay, and why? So the answer is Belinda tickled the dragon unmercifully because it was very scared. वो बहुत डरा हुआ था and cried for a safe cage और एक safe cage को ढूंढ रहा था. They all laughed at it as it was a coward. Now, we see the poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, like some more, list some more such poetic devices used in the poem? तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे रखा है, which is same as what we had done earlier. You guys can just go through it and you will get an essence of it, like what exactly should we be writing in this particular answer. All right, Nishrit beta, we are dealing with Tale of Castor the Dragon. All right, okay. And if you don't have sense to talk to your teacher, then kindly talk in the same tone with your parents. And you are kicked off my class now. All righty. Now, here we go. Okay, we already dealt with this question. It was pretty an easy question. Now, coming to Dust of Snow, this is one of the poems. Again, a very easy poem already, but a very important one wherein we are talking about the important aspects. Okay, so this has been written by Robert Frost. So now coming to the very first point, what is Dust of Snow? How does the poet say has changed his mood? How has the poet moods changed? So here, what do we see, everybody? The dust of snow means the fine particles or flakes of snow. The sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. So he felt, what did he feel? He felt refreshed and he wanted to enjoy the rest of the day. Okay, this is an important aspect. Now, how did the crow change the poet's mind? Again, past tense में पूछा जा रहा है. So the poet was going somewhere in a snowing morning. He was upset. All the trees were covered with snow dust. A crow sitting on a hemlock tree shook the tree in such a way that some dust of snow fell on the poet. And this changed his mood and he became happy and relaxed. Again, next. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? What was mein pucha gaya. Normally people thought both crow and hemlock tree are inauspicious. Sorry, inauspicious, yani ki not good, right? Ill omen. But when the dust of snow from hemlock tree fell on poet, he took it another way. He was depressed and sorrowful, but the moment the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on him, he felt unburdened and relieved. That's what we see. Next question.
How does the poet react to crow and hemlock tree? Poet ने कैसे react किया hemlock tree पे? Crow and hemlock tree are considered inauspicious in the West. They are generally taken as bad omen. But the poet did not take them in a negative way. They saved his day. His negative outlook changed to the positive one. Next question. Why does the poet feel that he has saved some part of the day? All right. Crow shook down the dust of snow on the poet. Both crow and hemlock tree are considered inauspicious. In a way, आपको जो broadly इसमें highlight करना है, या संजीव, you are right. आपको जो broadly highlight करना है about crow and the hemlock tree would be that they are symbol of inauspicious things. Alright, they are the negative symbols. They represent ill omen. They represent bad luck. These are the words that you can always use in their context. Okay? So crow shook down the dust of snow on the poet. Both crow and hemlock tree are considered inauspicious. The falling of dust of snow from hemlock tree is bad omen, but the poet took it in a positive way. He found himself relieved from sorrow after this incident, and now he could use his entire day in a fruitful way. Okay? Simple movement proves to be very significant and saves rest of the day of poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. Thoda long answer like that, okay? So Dust of Snow is a beautiful poem written by Robert Frost. जैसे कि हम एक बड़ा सा answer start करते हैं. That way you'll have to go ahead with it. This poem conveys that even a simple moment has a large significance. यानी एक छोटे से moment का भी बहुत बड़ा significance होता है. The poet mentioned crow and hemlock tree in this poem. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both they signify that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive, and bitter side of nature to present his similar mood. That's what we see. Now, moving ahead, everybody. The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree. A crow sitting on the same tree shook up the dust of snow, small particles of snow that remained on the surface after the snowfall on the poet. This simple action changed the poet's mood. He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. But the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity. His sorrow was washed away by the light shower of dust of snow. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. Okay. So, what do the hemlock tree and crow represent? What does the dust of snow metaphorically stand for? The poet was going somewhere. He was upset. All the trees were covered with snow dust. A crow sitting on a hemlock tree shook the tree in such a way that some dust had fallen on him. So, in a way, the answer here seems to be the same one. Alright, now Fire and Ice, the next poem, which is being again written by Robert Frost. Let's have a look at it, everybody. What are the two different views about the end of the world in the poem Fire and Ice? दो different views हैं. Alright, और वो क्या है? The two different views of people regarding the end of the world are fire and ice by desire and hatred. यानी कि desire जो दिखाया जा रहा है वो fire के through दिखाया जा रहा है, जो hatred दिखाया जा रहा है वो ice के through दिखाया जा रहा है. What does the poet think about the end of the world? Poet क्या सोचता है end of the world को लेके? The poet thinks that the end of the world the poet thinks about the end of the world that people think fire is the main cause of destruction. But by the end of the poem, he says that both fire and ice are equally destructive. Both have the same power of causing destruction. What do fire and ice symbolize in the poem Fire and Ice? ये बहुत important question है. Fire and ice are symbolized here. Fire stands for conflict, fury, intolerance, insensitivity, while ice stands for greed, avarice, lust, rigidity, coldness, indifference, hatred, etc. So broadly, fire represents desire, and broadly, your ice represents hatred. That is what you have to keep in your mind related to this particular thing. Yeah, Green Beast, you are absolutely right about it. What message does the poet wish to convey through the poem Fire and Ice, or what is the central idea of the poem Fire and Ice? Very important. The poet presents the two possibilities about the end of the world. It'll be either due to fire and ice. He prefers the first, as he believes that the world will end in fire, but the ice will not go away. Okay. Now the next question. How has Frost brought out the contrasting ideas in the poem? In a way, the answer remains same. Desire propels us in hot pursuit of something. Hence, it is compared with fire. Hatred makes us cold towards others' feelings. The coldness of ice can numb our senses. Similarly, the coldness of our hearts can numb our kindness. That is why hatred has been compared with ice.
Alrighty, people. Is that clear to everybody? Ever made sense? Now we are moving towards our next poem, which is A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. So, first question, it's a long answer question, 8 5 mark ka hai, wherein we see freedom is a birthright. It is the most beautiful gift of God. It is valuable for all human beings as well as for creatures. Discussed with reference to the poem A Tiger in the Zoo. So that's what we see. All right, poem is like broadly talking about what it is, broadly talking about the need for freedom. Okay, do you all get that? Are you all with me, everybody? Are you all understanding this? Could you please say yes or no in the comment section so that I would have an idea that yes, you all are listening to me. Yes, everyone. Quickly, please. Come on. Everyone. Okay. Here we go. Alrighty. तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है गॉड का. इट्स अ बर्थ राइट. विदाउट फ्रीडम ऑल इज इन वेन. Since the man has come on his earth, he tries to enslave the weaker sections. ठीक है, जो आदमी का ये पर्टिकुलर नेचर होता है कि जो भी वीकर सेक्शन है उसको कंट्रोल करे. For his own selfishness. If a bird lives in a golden cage, it cannot become happy. It loves to fly freely in an open sky. In the same way, if a man lives in a prison and gets everything, he cannot feel happiness. Okay, but if a man lives freely, he'll be happy even in poor conditions. In this poem, we find the description of two tigers. One is in cage and second in an open field forest. So there is a great contrast between their behaviors. All right. Is that clear, everybody? Clear? समझ आया? Okay, guys. चलिए. Tigers are becoming extinct due to deforestation or poaching. How can people be sensitized about the need of tiger? ठीक है, अभी हमें पता है कि जो टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहा है. तो हम कैसे लोगों के अंदर ये थोड़ा सेंसिटिविटी लेके आए, उनके अंदर ये इमोशंस लेके आए कि हमें जरूरत है. ठीक है, आप ही कैसे करोगे? Tigers are considered as an endangered species. उनको हम endangered species बोलते हैं. People are killing tigers. वो उनको मार रहे हैं उनके skin के लिए, उनके bones के लिए, उनके claws के लिए, उनके teeth के लिए. Due to this, जो population है tiger की वो decline हो रही. तो we should not encroach on their habitat. मतलब हम जाके उन पे उनके जो habitat है, उनका जो जंगल है, उस पे हमें अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए. एज वी ऑल नीड शेल्टर्ड होम. जैसे कि हम लोगों को भी एक छत चाहिए होती है रहने के लिए अपने सर के ऊपर. टाइगर्स ऑल्सो नीड नेचुरल सराउंडिंग्स. तो टाइगर्स को भी एक नेचुरल सराउंडिंग चाहिए. फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट डाउन. फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए. दे मस्ट बी गिवन मोर स्पेस टू मूव फ्रीली अराउंड. यानी टाइगर्स को, एनिमल्स को भी हमें ज्यादा फ्री स्पेस देना चाहिए जिससे वो भी घूम सके यहाँ से. Now, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Name the poem and the poet. Who does he refer to? Where is he kept? Where is he? Is he happy there? Pick out the word from the extract that means the same as bright. All right. तो आपको पता है इस पोम में टाइगर इन द जू में, कल मैं ये टाइगर इन द जू एक बार फिर से करा रही हूँ आप लोगों को. ऑल राइट, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सो द सेशन जस्ट कुडंट गो वेल. तो टाइगर के लिए बेसिकली क्या है, क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पोम में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. जैसे यूजुअली व्हाट डू वी रियली सी, like tiger is like for animals we use the pronoun it, but in this particular poem you see that the word the pronoun he has been used. तो आपको पता है हम he किसको रेफर कर रहे हैं. So these lines have been taken from the poem A Tiger in the Zoo, which has been composed by Leslie Norris. All right, this is what you will have to keep in mind. All right, and then we have got like the next thing, like he's in the cage in the zoo. No, the tiger is not happy in the zoo, and then the next word is vivid. All right, yes, that's right. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He कौन है, टाइगर क्या represent करता है, opposite word light का क्या है. All right, and pick out the word from the extract that means the same as wait in hiding. Alrighty, I hope that's clear to everybody right in there. Okay, so here what do we see?
That he is referring to the tiger. Tiger is in his natural habitat, shadow and lurk. Okay. Next, everybody. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He कौन है पता है हमें? Why does he move around the houses? उसको घर के आसपास क्यों घूमना है? How should he be terrorizing the village? उसे कैसे डराना है villagers को? और noun दो terrorize का. तो हमें ना सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए. Yeah, green beast, you're right. He tiger है. He moves around the houses in search of his prey, अपना शिकार ढूंढने के लिए. He should be terrorizing the village people. मतलब उसको डराना है village के लोगों को. Bearing of his white fangs, यानी कि uncover करके अपने white fangs को. And with his claws, claws के साथ. And terror, noun terrorize का terror है. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So where is he locked? Where is he striding? Sorry, stalking. Okay, it's not striding. It's where is he stalking? And whom does he ignore? Pick out the word from the stanza that means his name is walk stiffly. Okay? So the answer is that he is locked in a concrete cell behind the bars. He is stalking. All right, he is talking in his concrete cell. He ignores the visitors and walks stiffly. Next poem and the last poem of our session, everybody. How to Tell Wild Animals by Calvin Wells. All right, इसमें क्या है? How does the poet distinguish the hyena from crocodile? In this particular poem, the types of questions that can come for you in your examination, like that could be just related to the characteristic of every animal, so you have to be mindful of what you're gonna write in your answers. Okay, just be very careful about that. Now we are gonna look at it like how does the poet distinguish the hyena from crocodile. Hyena को वो कैसे कर रहा है distinguish crocodile से. So the poet tells us how to distinguish a hyena from crocodile. A hyena is an animal, all right, who can laugh. The poet says that if a creature greets a person while smiling merrily, then that creature is hyena. If a creature sheds tears while swelling a person, swelling again means like eating, okay, a person, then it is crocodile. Simple two marker thing. All right, direct question. Okay, next question. Just a minute, there's a question. Yeah, what does the poet tell us about a chameleon? Okay, Hyena has many smiles. Yeah, Harishankar, you're absolutely right about that. Okay, so what does the poet tell us about a chameleon? तो हमें क्या गिरगिट के बारे में पोएट क्या बताता है? The poet tells us that a chameleon is found on a tree. Tree पे मिलेगी. It is a creature which can change its color according to its surrounding. It is very difficult to see a chameleon on the tree because it changes its color according to the color of the tree. All right. So we come to know the camouflaging habit of a chameleon. Okay. The poet has used some special qualities to describe the animals and create humor in the poem. Each of us also has some special qualities which make us quite different from others. Do you agree with this statement? Comment with reference to the poem How to Tell Wild Animals. A very important thing. All right, that is what we have to keep in our mind. Now, what does it say? Now, the answer is the poet tells us that the chameleon is found on a tree. Okay, it's a creature which can change its color according to its surrounding. So it is very difficult to see a chameleon on the tree because it changes its color. I'm sorry, guys. Like the answer to this particular question has been missed, though I'll be sending you the PDF. Okay, on community, the app. So I'll be just writing the correct answer and I'll just send it across to you. In this particular question, we are going to say yes, we agree with this statement. All right, like every creature and every person has got the different qualities, and that is why it makes that particular person different from the other. So similar kind of qualities have been portrayed by the poet in the poem How to Tell Wild Animals, because the poet describes that if there is a need, like if someone wants to recognize a hyena, then like the merry smiles would be a sign. If somebody wants to recognize the Bengal tiger, then the stripes, okay, the stripes on its skin would be a sign. If it's about a leopard, the spots on its skin would be a sign. So that way you would have to write it. So I'll be telling you that when I'll be sharing that particular PDF with all of you. Okay, I'm really sorry for this.
How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? तो कैसे पता चलता है कि हम lion है या tiger है? So the poet suggests that if a large and tawny beast comes towards you, then it's an Asian lion. We can identify it when it roars at us while we are dying with fear. When, while roaming, we come across a wild beast that is yellow in color with black stripes, it is the Bengal tiger. We can identify it when it eats. Simple question, 2 marker. But yeah, you can expect such questions from this very particular chapter, wherein you are being asked to contrast the characteristics of the different animals. All right, everybody. Yes, Ranu, right on the special classes. Today also we have got a special class wherein I'm going to deal with the questions and elaboration of how to tell wild animals right at 8 p.m. So be right there. Okay. Now, how can a man know that the beast is leopard or describe some features of the leopard? Alright, यानी कि आप हमें characteristics देखने leopard के. तो leopard की characteristics हमारे क्या हैं? It's like pretty easy. Leopard की characteristics हमारे ये हैं that leopard has spots on its body. Leopard की body पे spots होते हैं. It is a dangerous and powerful animal. ये dangerous और powerful animal है. It has the quality of leaping again and again. इसकी एक quality है कि ये बार बार leap करता है. It leaps over its prey at once. मतलब वो एक बारी में कर देता है. Very fast animal. It eats its prey. Okay. It eats its prey. So we are done with all the important questions. I hope guys आपको समझ आया हो. Now I would like to tell you about the fact आपको पता है CBSE class 10 achievers list बहुत लंबी थी. यहाँ पे Unacademy में remarkable performance was being given by Unacademy learners in CBSE class 10 board examination. 99.8% was the highest scorer. 412 plus learners secured 90% or more. Then we have 100 plus learners, all right, who are like secure 95% or more. Then 114 plus learners, they secured 100 marks in different subjects. So of course you can be the next one and you can enjoy that. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स. टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स. स्टडी प्लानर है, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज. स्टडी मटेरियल है, स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट. फिर एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस है, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप बाय एग्जाम एक्सपर्ट. प्लस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे. This is all going to be like really an amazing thing. Like a wild animal, then we have to write yes, Shiva. In that case, you'll have to write about all the wild animals that are being mentioned in this very particular poem. All right, and it will not be like too much because all the characteristics, they are just one-liner statements, not too much. Okay. So everyone, ace your preparation with the top educators because we have got Unlock 20 right in here. You all can get to a 20% off on CBSE subscriptions. Offer is ending on September 16, 11:59 p.m. Comprehensive syllabus coverage, comprehensive notes and PDFs, PYQs, live tests and quizzes, in-class doubt solving by top educators would be there. So subscribe right away by using the code PSH10 for your betterment because it'll be giving you directly 20% discount. Okay, so don't let the date go. आपको पता है आज हमारी 14 सितंबर हो चुकी है, आपके पास 2 दिन और आज का भी कुछ टाइम है, जल्दी से डिसाइड कर लो क्योंकि बहुत सारे बैचेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं जो अब हम आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प होगा. सो प्लीज मेक श्योर यू आर कमिंग अंडर द करेक्ट गाइडेंस फॉर योर ओन बेटरमेंट. ठीक है, आपके खुद के लिए अच्छा होगा कि आप अपना लाइफ के बारे में सोचो एंड मेक अ गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ. तो जैसे कि ये क्या कहते हैं, जैसे प्लस में अगर आप ये 24 मंथ्स के लिए लेते हो तो अभी हमारा करंट प्राइस है 30,099 रुपीज. आप क्या पे करोगे 30,479 एंड आप क्या सेव करोगे 7,620. तो ये क्या हुआ 20% की सेविंग्स हुई. नाउ 12 मंथ्स एवरीबडी 22,799 करंट प्राइस है. आप क्या पे कर रहे हो 18,239 और आपका जो डिस्काउंट है वो क्या है 4,560 रुपीज. तो यू बी माइंडफुल व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ. जैसे आपने यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हो आइकॉनिक तो अभी आप पे करोगे 37,030 रुपीज. आप सॉरी ये करंट प्राइस है और जो आप पे कर रहे हो वो है 29,624. ठीक है, दैट इज द थिंग. और यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट गाइस. ऑलराइट, और यहाँ पे आपको ये सेम चीज मिल रही है, आई मीन सॉरी डिस्काउंट मिल रहा है आपको 7,406 का, जो आपका बेसिकली क्या है आपके डिस्काउंटेड 20% का डिस्काउंट है. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस. ऑलराइटी, तो क्रैक अनसैट गाइस, स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है ये. 100% स्कॉलरशिप आईटी जेई नीट यूजी क्लास 9 to 12 आप सब लोग ले सकते हो.
स्कॉलरशिप टेस्ट को एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप होगा. You can win a trip to Eurospace Center also. Test dates are October 8 and 15. So please make sure you're using the code PSH10 and you are enrolling and registering for it right away. Okay, do it everybody. तो टारगेट हाफ ईयरली बेटा ये हमने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए सितंबर 1 से. मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हिंदी चल रही है. दिस इज फॉर क्लास 9. हिमाल सर, कुणाल सर, दिगराज सर, भावना मैम एंड लखन सर. They are teaching science, math, social science, Hindi, B and English respectively for all the 90s. Then the rapid revision half yearly for class 10. Start date September 1, 2022. Mode of delivery English. Vinay sir, Bhavna ma'am, Digraj sir, Vandana ma'am and Akash sir are there. So PSH10 आपका कोड है. फटाफट से लगाओ, बैचेस में आ जाओ. Alrighty. शिवा बेटा क्लास अटेंड करना 8 बजे रात को. आई विल बी टेलिंग यू, ओके, बिकॉज इन ऑल माय स्पेशल क्लासेस I tell you all like how to frame a good answer. Okay, so thank you everyone. I'm gonna catch up soon. Do not forget to subscribe the channel, all right, if you're watching it for the first time, and do not forget to like it and share it with all your friends because we should always be helping each other. Okay, so take care everybody. Bye bye and let's